Let me share the screen first. Yeah, you may start. Sir, is screen visible? Yeah, it's visible, perfectly visible. Okay, sir. So data visualization is a uh, uh, the simple meaning of data visualization is to visualize the data. Uh, Graphical representation like bar charts, pie chart. It used to express a large numerical value into a simple one image data. We can use many libraries for data visualization, like Matplotlib, Seaborn, and many more. So first of all, we have to import libraries, and here I load the CSV file. The name of the CSV file is temporal CSV. In this CSV file, it's a trend of data science, ML, and deep learning over the 16 years, from ranging from 2004 to 2020. So here are some basic methods to describing the data to view to understanding the CSV file. Uh, by a simple method, data drop is not of sum. We can check uh, is the data content is any null value or not. सर मेरी वॉइस आ रही Right, are. है एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन प्लॉट चार्ट इसमें अपन कोई भी वैल्यू को लंबे टाइम पे बढ़ा सकते मतलब टाइम रेंज के हिसाब से बढ़ा सकते हैं कि इतने टाइम में इसकी ग्रोथ हुई है ये बेसिक प्रोटीन है इससे पता चलता है और ये अपन नॉर्मल है इसमें टाइमिंग के हिसाब से डेटा साइंस के ट्रेंड के बारे में बताया लाइक 2004 टू 2020 में इतना वेरिएशन आया इसकी पॉपुलरिटी में और ये मैथ प्लॉट के थोड़े बेसिक फंक्शंस है लाइक एच लेवल this function is used to label the x-axis arise the operator between data science, ML, and deep learning. Line chart have some disadvantages like plotting too many graphs is clustered and confusing. Uh, a wide range that means of data variation is too high, then the line we are not able to understand the line chart. And for fractions and decimal numbers, it's a quite bit difficult to understand. The certain chart is scatter plot or Cartesian plot. Cartesian plot use two uh, two, two, two points like correlation to plot. Like in this, I use data science and machine learning to compare between both of them via scatter plot. The advantage, like line chart, it also has some advantage and disadvantage. Like uh, it shows the relationship between two. Where it's a advantage. Uh, it shows the relationship between two variables, and it is a best method to show non-linear pattern. Uh, uh, it has some disadvantages like we cannot as
we cannot include the third variable. स्कैटर प्लॉट में सिर्फ दो ही वेरिएबल से प्लॉट हो रहा, अपन थर्ड वेरिएबल नहीं ले सकते. और ये एग्जैक्ट कोरिलेशन के बारे में बता नहीं सकता, बता रहा स्कैटर प्लॉट. And the net data visualization chart is bar chart. The advantage of bar charts are it shows the data category and a frequency distribution, and it used to summarize a large data set in visual form. It in this the data science module, we can see the data science module popularity by due to data science from 2004 to 2020, sorry. The basic functions like legend, title were all same included in here. In this, all the three modules, machine learning, deep learning, and data science are used. From this chart, we can easily compare all the three field comparison. Like in the starting, the ML, machine learning is on top by over the span of time. Deep learning exceed all of the data science and C. Data science is a constant. Like at the starting, it is on a second position, and on the last, it is on a second position. We can clearly see that. Bar charts have some disadvantages, like it requires additional explanation, and it is and it can be easily manipulated to deliver false impressions. The next graph is histogram. Advantages of histograms are it's simple and versatile, and it can be used as quartile 1, quartile 2, quartile 3, and quartile 4. The straight line between the dots is a median, which divide the data into two parts. Like the left side of the line is 50% of data, and the right side of the line is 50% In data. short, we can say कि बीच वाली line जो है that is median, और box का जो left line है that is first quartile, और box का जो last ending line है that is third quartile, और जो ये दो end points वाली line है that is minimum and maximum value, और minimum और maximum value के बाहर भी अगर कुछ दिख रहा है that is an outlier. Yes sir. है ना? Yes sir. तो ये क्या कब यूजफुल होता है बॉक्स प्लॉट? सर जब अपने को जब कोई लार्ज अमाउंट का डेटा सेट है, अपन उससे ना ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, और आउटलायर्स को काफी अच्छे से बताता है. इन केस आउटलायर्स है नहीं है, वो तो स्कैटर प्लॉट भी बताएगा आउटलायर्स है नहीं है. हाँ सर बट इस बॉक्स प्लॉट में ज्यादा अच्छे से मतलब विजुअलाइज ज्यादा अच्छे से होता है. Man, that's not the case. Okay, you need नहीं, to read more on this. Yes. बॉक्स प्लॉट सही है, आउटलाइनर के लिए बॉक्स प्लॉट ही सही है, क्योंकि उसमें वो मोड दिखाता है डेटा का फ्रीक्वेंसी किधर है, मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा. तो इसके लिए बॉक्स प्लॉट इज बेटर फॉर आउटलाइनर. और कोई इनपुट है? सौरभ, शाबाज? सर बॉक्स प्लॉट में होता है ना सर, हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग का आउटलायर हम लोग का मैक्सिमम रेंज से आगे है या मिनिमम रेंज से पीछे है. तो अगर हम लोग पॉइंट, यही पॉइंट है यहाँ पे कि आउटलायर्स तो हम स्कैटर प्लॉट से भी देख सकते हैं, दिखता वहां भी है, लेकिन उसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता चलती है कि आखिर कितना बाहर है, किस लिमिट से बाहर है ना. क्वालिटेटिवली हम वहां देख पाते हैं कि ठीक है दिखता है कि हाँ इतनी दूरी पे है,
बस विजुअलाइज होता है, लेकिन क्वांटिटी में नहीं पता चल पाती है वहां पे। तो क्वांटिटेटिवली अगर आप देखना चाहें आउटलायर्स को ना, तो बॉक्स प्लॉट बेस्ट है। और कोई इनपुट? और कोई इनपुट नहीं ना? ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, बॉक्स प्लॉट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, ठीक है मेतुल, और कुछ है नीचे? सर बस रेफरेंस है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड गुड। इसमें लेकिन आपको ना और समझना होगा, आपको एग्जांपल्स लेने होंगे, डेटा सेट उठाना होगा, उसमें दिखाना होगा कि देखो ये पॉइंट पे आके मेरा कैसे आउटलायर्स दिख रहा है, ये स्कैटर प्लॉट नहीं कर पा रहा है, स्कैटर प्लॉट में हमें ये डिफिकल्टी हो रही है, बॉक्स प्लॉट उस डिफिकल्टी को खत्म कर रहा है ना। ये सब चीजें आपको कुछ अलग अलग टाइप के डेटा सेट लेके एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि किस टाइम पे कौन सा काम में हमें बॉक्स प्लॉट ज्यादा हेल्प कर रहा है, अदर प्लॉट्स हमें कम हेल्प कर रहा है ना। तब तो हम लोग जब ओके रियल प्रोजेक्ट्स के डेटा सेट को उठाएंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि अच्छा किस टाइम पे। सबको पता है बॉक्स प्लॉट क्या होता है, स्कैटर प्लॉट क्या होता है, हिस्टोग्राम, ये सब हमने स्टार्ट में ही पढ़ा हुआ, बट टू व्हेन टू यूज ये हमें सीखना है। दैट्स द डिफरेंस। कोड कैसे करेंगे इज नॉट इम्पोर्टेंट, कोड तो आप लिप्टर फाइल में लिख दोगे, हम हमें जब समझ में आ जाएगा तो वी कैन सर्च, मगर कैपेसिटी क्या है किस प्लॉट की ना, ये समझना इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि इसको आप एक्सटेंड करो और इसके केसेस को समझो कि कब किस केस में कौन सा प्लॉट हेल्पफुल हो रहा है आपको समझने में। आप यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम कैगल, कैगल में बहुत अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन के पार्ट दिए गए हैं। Meanwhile, you can contact any group member, Saurav is there, उसको आप टेक्स्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो, कोई अच्छा उसके पास नोटबुक होगा वो आपको फॉरवर्ड कर देगा विजुअलाइजेशन रिलेटेड। मैं भी, मुझसे भी बोलना, मैं भेज दूंगा कुछ फॉरवर्ड, वो होंगे मेरे पास कुछ नोटबुक कैगल के, so that you should learn and present। ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है ग्रुप मेंबर्स के लिए, ये विजुअलाइजेशन पार्ट और जो फीचर इंजीनियरिंग पार्ट है ये बहुत वैल्यूएबल है। Anyway, it was great, good session.